Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Humanities Adda, and this video we are going to start with class 11th history, and we will be doing writing and city life, which is about Mesopotamian civilization, and this will be part 1 of it. So first of all, let me introduce myself. My name is Amisha Gautam. I have done my graduation in history from Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University. Currently, I am pursuing my master's in history from Delhi University itself, Lady Shri Ram College. And I'm also preparing for UPSC Civil Services. And I'm also running my crash courses for, history class 12 students. So let us begin with this chapter. So before beginning with the actual chapter, there are certain things that I want you to know and I want you to understand. For instance, urbanization, urban revolution, civilization. So these are the things that you need to understand before starting with actual chapter, because without these things you won't be able to understand certain things. So let us start. Urbanization denotes the concentration in a particular settlement. Just a second. I'll just annote. I'll just use a pen to. Okay. Now, urbanization denotes the concentration in a particular settlement of a fairly large population pursuing diverse economic activities and having a high degree of interdependence. तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि आपको देखने के लिए मिलता है कि एक पर्टिकुलर सेटलमेंट में आपको बहुत लार्ज पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रही है, and this large population they are carrying out diverse economic activities that someone is going to office, and for instance, if you take example of today, someone is teacher, someone is a doctor, someone is an engineer, someone is an IS officer, someone owns a business, someone is a working in a shop, someone has a shop. So this is when we talk about diverse economic activities, so this comes into our mind. Okay, and having a high degree of interdependence means that we all are dependent. We are dependent on the farmers for our food. On the other hand, farmers are dependent on the doctors for their healthcare services. They are dependent on the on any other person for other things, for the bank, for the financial services, for the bankers, for the financial services, you can say. And on the other hand, आप अलग अलग तरीके से आप अलग अलग लोगों पर डिपेंडेंट हो, तो आप देखते हो कि इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पे. Urbanization. A prominent feature of urban center is extensive specialization and division of labor. So division of labor जो अभी हमने बात की वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है. On one hand, and absence of self-sufficiency on the other hand. So nobody is self-sufficient. If the farmer thinks that he's growing his own grains and he becomes self-sufficient that way, then that is not the case. Because for other services, he will require other person. He cannot operate on him on his own, or he cannot just drive that. If he have to go somewhere, he cannot drive the bus himself, or he cannot walk long distances to go somewhere. He needs to take a bus. He needs to take that service. बस उसको लेनी पड़ेगी, ट्रेन उसको लेनी पड़ेगी. तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से इनफैक्ट ही विल नीड टू टेक स्पाइसेस एंड ऑयल एंड अदर दैट प्रोसेस्ड मटेरियल फ्रॉम द मार्केट. ही नीड टू बाय ऑल दैट. तो आप देख रहे हो कि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, एक अर्बन सेंटर में आपको नहीं देखने के लिए मिलती है. सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस पहले हुआ करते थे, अब के टाइम में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा. देन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अर्बन सेंटर्स में. पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द सेटलमेंट ऑल्सो इमर्जेस एंड ऑल्सो इज देयर. पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स कहीं ना कहीं आप देखते हो कि किसी भी फॉर्म का आपको पावर सेंटर इमर्ज होने लगता है for controlling and regulating the settlement. It also happened in the Mesopotamian civilization. Initially आप देखोगे temple states बनते हैं, temple gained the authority, and later on you will see that the authority will be passing on to the kings.
Structures of authority for managing disputes will also be there. Some large buildings which have specific functions will also be there in an urban center, or you can say in the case of urbanization. Now, moving on to the next thing, you can say, uh, okay, so let's move on to the next topic. Just a second. Okay, wait a second. Now, we have to see other developments along with growth of urban centers. तो हमने urban centers का growth देखा. अर्बन सेंटर में आपको पॉपुलेशन देखने के लिए मिल रही है, अर्बन सेंटर्स में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिल रहा है, इंटरडिपेंडेंस देखने के लिए मिल रही है. उसके साथ आप देख रहे हो centralized accumulation of capital resulting from the imposition of tribute or taxation. टैक्स का सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा. People will be forced to tax, forced to give taxes. टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है. अल्टीमेटली आप देखते हो कि हर स्टेट फॉर्मेशन के टाइम पे हर एक तरीके से किंगडम जब इमर्ज होता है तो ये सिस्टम हो ही जाएगा कि टैक्सेस उनको पे करने पड़ते हैं. मॉन्यूमेंटल पब्लिक वर्क्स विल बी देयर. इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके अर्बन सेंटर्स के साथ में ये चलते हैं. डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस विल बी देयर. इमर्जेंस ऑफ क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, it is also important thing that important development that takes place along with urbanization, because you see with this with the division of labor, okay, different sections of the society, they will be working different in different areas, and they will be earning differently and different amounts, and hence you will see that जो उनका सोसाइटी में एक तरीके से जो उनकी अर्निंग है वो डिफरेंट हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई दे नाउ द रिच एंड पुअर वाला जो एक तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी का वो भी हो जाएगा. freeing of population for full time craft specialization, this will happen because surplus production will be there. Now these farmers will be producing extra. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्पेशल जब हम सिविलाइजेशन को देखते हैं, सिविलाइजेशन तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब surplus production hota hai. That means when the farmers they produce in extra amount, only only a civilization can exist. Because आप देखो कि जब एक फार्मर है, वो मतलब 10 फार्मर काम कर रहे हैं और वो अपने से वो 20 लोगों का खाना जब उगाएंगे, तभी तो वो 10 लोग एक्स्ट्रा है वो दूसरे काम में इन्वॉल्व हो पाएंगे. फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 people, and initially it was required that all the 10 people they were growing food for themselves, but बाद में एक चल के इन्होंने डिसाइड किया कि 10 people they will be growing food for other 10 also. तो एक इंसान अब दो लोगों के लिए, मतलब 2 लोगों के लिए खाना उगाएगा, एक अपने लिए और एक दूसरे के लिए. by doing this, one person will be free to do some other work. So by this way you can say कि एक जो इंसान है, एक इंसान अब फ्री हो जाएगा कुछ और काम करने के लिए. सो ही विल बी इन्वॉल्विंग इन सम काइंड ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, तो वो कुछ और काम करेगा. तो इस तरीके से आप देखते हो कि पॉपुलेशन फ्री होती है. नाउ politically organized society based on territorial principles, state for one based on kin ties. अब आप देखोगे कि politically organized society आपको देखने के लिए मिलेगी. डेवलपमेंट जो हो रहा है ये अर्बन सेंटर्स के साथ किन टाइज के बेस पे, जो आपको पहले अर्बन सेंटर से पहले वाला जो किन टाइज के बेस पे टेरिटोरियल वो होता था, मतलब किन टाइज के बेस पे आप देखते थे कि ऑर्गेनाइज किया जाता था सोसाइटी को, वो अब नहीं हो रहा है. आप टेरिटोरियल प्रिंसिपल्स पे, मतलब आप टेरिटरी के बेसिस पे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सोसाइटी को, स्टेट को एक तरीके से. Okay, so the state will be organized on the territorial principles, and for one based on the kin ties. So आपकी territorial principles जो है वो consideration में आ जाएंगे. Long distance trade will also be there. So these are some of the developments that will be taking place along with the urban center. Urban center तो आपके है ही है, और urban center के development के पीछे का भी reason आपका surplus production है. So the main thing is this surplus production. That is the important thing. Now, urban revolution क्या है? According to Gordon Child, he's a scholar historian है ये आपके. इन्होंने ही urban revolution को term किया. इनफैक्ट न्यूलिथिक revolution के बारे में भी यही बात करते हैं.
गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि अर्बनाइजेशन वाज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट बट वाज क्लोजली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेटलर्जी, सरप्लस प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन, क्लास डिफरेंशिएशन एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो अर्बनाइजेशन जिसको अभी हमने यहाँ पे देखा, ये अर्बनाइजेशन, ये वाला प्रोसेस एंड अदर डेवलपमेंट्स को हमने जब कंसिडर किया उसके साथ जो हो रहे थे, उन सबको कंबाइन करो अगर आप, तो दिस इज कॉल्ड द अर्बन रेवोल्यूशन। सो ही सेज कि अर्बनाइजेशन वाज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट बट it was closely related to technological advancement, metallurgy, surplus production, specialization, class differentiation and state formation. अब आप देखो, all these elements combined with the invention of writing together constituted the urban revolution. तो ये सब कुछ मिला के आपके urban revolution form कर रहे हैं. This is a kind of a revolution taking place. I hope this much is clear. And if anything is not clear, you can just ask me in the comment section. I'll try to explain it again, or in the, I'll try to explain it in the next lecture. Now here comes the civilization. अब यहाँ पे कह रहे हैं, गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि the urban revolution ushered in the civilization. So first you have the urban revolution, and then this urban revolution will be ushering in the civilization. So almost you can say that urbanization and civilization is almost, the both are the same thing. Civilization is a definite stage of human social evolution. एक definite stage है human social evolution का. It is distinct from earlier phases, namely hunting gathering phase जो आपका था, and in fact Neolithic societies जो आपकी exist करती थी. If you know about the Neolithic societies, if you have any idea about the Neolithic societies, जो Stone Age की जो आपकी phases हैं, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic societies में you see that the advent of agriculture was there in the Neolithic period. Neolithic period में people started growing crops. They got to know about this thing, agriculture. ये वाला agricultural societies जो है, इनसे आप देखते हो कि ये distinct है. Civilization is distinct from all these phases. Hunting gathering वाले लोग भी थे, आपके Neolithic societies भी exist कर रहे थे, but why we did not call them Neolithic societies वाले जो लोग हैं, they were making pottery, they were settled, they were growing crops, but yet we did not call them civilization. Why is it so? Because there are certain characteristic features which we look for when we have to define a civilization, and which when we have to designate a place as a civilization. So not every habitation is a civilization. So this is very important. Okay, just wait a second. Which are not yet sufficiently advanced to produce surpluses. So very important thing is that the production of surpluses. सरप्लस प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सरप्लस प्रोडक्शन. प्लीज इसको ध्यान में रखना. विदाउट सरप्लस प्रोडक्शन अ सिविलाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट. विदाउट सरप्लस प्रोडक्शन स्टेट फॉर्मेशन कैन नॉट टेक प्लेस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सरप्लस प्रोडक्शन. सरप्लस प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा तो सोसाइटी में पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी एक तरीके से, एंड आपकी पॉपुलेशन फ्री नहीं होगी दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर टिल हियर, एंड आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा. एंड if it is not very much clear, then I'll make sure that next lecture में कोई भी डाउट हुआ किसी को तो मैं वो उसको क्लियर कर दूंगी. Take it like this, that I'm giving you a free crash course over here, because I teach the same way in the crash course. Okay, so now next हम देखते हैं traits of civilization. Characteristic features क्या हो सकते हैं civilization की, क्या क्या होते हैं. एक तो हो गया आपका अर्बनाइजेशन, वही जो हमने बात की कि डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें वही होता है कि आपकी सिटीज हैं basically, you can say. Then you have surplus production, complex social system है, division of labor है, existence of state है, organized religion हो गया, use of metal हो गया, development of sciences है, development of writing है, and what not, and many more traits are there as given by Gordon Child. He gave around 10 characteristic features which should be there, or which describes a civilization.
So this is it for the extra part. Okay, just wait a second. This is it for the extra part जो मैंने अपने साइड से ऐड किया है. Now we are going to start with your book. अब आपकी बुक का पोर्शन स्टार्ट करेंगे. ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो आपकी बुक के फ्रंट मतलब स्टार्टिंग में जो चीजें दी हुई है. A city life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and the Tigris River that is now part of the Republic of Iran. If you look at the map, here you can see Euphrates and Tigris River. यहाँ पे इसके बीच वाले एरिया में you will see this thing, Mesopotamian civilization. मेसोपोटामिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड यू विल सी कि ये रिवर का जो फ्लो है दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ. ये याद रखना. एंड नाउ इट इज पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक. अभी ये पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी के लिए जानी जाती है, सिटी लाइफ के लिए जानी जाती है. इट्स वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर. आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच लिटरेचर मिला है. लॉट ऑफ टेक्स्ट आर देयर, लॉ कोड्स एंड इनफैक्ट अ नंबर ऑफ अदर टेक्स्ट आर देयर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. सो दीज टेक्स्ट लिटरेचर एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर. सो यहाँ एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. दीज आर द थिंग्स which it is known. Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BCE, so that kingdoms of that entire region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt in the language and script of Mesopotamia. अब 2000 BCE के बाद आप देखोगे कि इनकी जो लिटरेचर है एंड राइटिंग सिस्टम है वो इस रीजन में स्प्रेड हो जाएगा. आई से ये वाला जो आपका मेडिटेरेनियन रीजन है और ये जो आपके इधर वाले सीरिया वाला रीजन ये हो गया दिस रीजन बेसिकली. जस्ट अ सेकेंड. नॉर्दर्न सीरिया हो गया. देन यू हैव द टर्की. दिस इज द टर्की मेडिटेरेनियन. यहाँ पे आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, इजिप्ट, पैरो ऑफ इजिप्ट. तो ये लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया में आपस में ये लोग इनकी लैंग्वेज में इनके राइटिंग सिस्टम में दे वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर एंड इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स. ओके, ये इधर आपके वेस्टर्न पार्ट में काफी स्प्रेड हो गया था. Here we shall explore the connection between city life and writing and then look at some outcomes of sustained tradition of writing. तो हम यहाँ पे कनेक्शन देखेंगे बिटवीन सिटी लाइफ एंड राइटिंग. सिटी लाइफ एंड राइटिंग के बीच का कनेक्शन देखेंगे एंड देन वी विल लुक एट सम आउटकम्स ऑफ अ सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग. एक सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग का आउटकम भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या आउटकम रहा होगा. जस्ट यू कैन लुक एट द मैप. मेसोपोटामिया इज हियर. Here you have the Egyptian civilization will be flourishing in this area. And इधर वाले रीजन में आप देखते हो कि राइटिंग स्प्रेड होती है इनकी और लिटरेचर स्प्रेड होगा. And then these regions will be writing and communicating with each other. So now in the beginning of the recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called Sumer and Akkad. अब आप देखो, just look at the map. I think one more map is there. I can explain through both the maps. Just wait. So if you see this map, this is the Mesopotamia. Okay, ancient Mesopotamia है. I'll just use the annotations. Yeah. आप देखो कि यहाँ पे आपकी बुक में just a second. First of all, the point given over here is in the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south. सबसे पहले आपका अर्बनाइजेशन साउथ में होता है, सदर्न मेसोपोटामिया में होगा. was called Sumer and Akkad. Sumer and Akkad. So Sumer and Akkad. We will locate Sumer and Akkad both. आप देखो ये है आपका सबसे जो सदर्न वाला रीजन है वो है सुमेर एंड उसके ऊपर वाला रीजन था वो था आपका अक्कड़. ओके, नॉर्थ वाला जो रीजन था वो नदर्न मेसोपोटामिया. अभी के लिए आप इसको कंसिडर कर लो. ओके, नाउ वी विल मूव बैक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं. आफ्टर 2000 BCE, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region.
अब आप देखो कि जब 2000 BCE ऑनवर्ड्स बेबीलोन जो है इम्पोर्टेंट सिटी बनेगी, तब बेबीलोनिया यूज किया जाएगा फॉर फॉर द इंटायर सदर्न रीजन। तो ये पूरे इंटायर सदर्न रीजन को बेबीलोनिया की मतलब बेबीलोनिया से रेफर किया जाएगा, जब ये बेबीलोन जो है वो इम्पोर्टेंट सिटी की तरह इमर्ज करती है। इज दैट क्लियर? आई गेस. Now, from about 1100 BCE, when the Assyrians established their kingdoms in the north, the region became known as Assyria. अब नॉर्थ की अगर हम बात करें तो 1100 BCE में जब आप देखते हो कि यहाँ पे असीरियंस जो है इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, तो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है, इट वाज नोन एज असीरिया. Now, the first known language of the land was Sumerian. क्योंकि साउथ में अर्बनाइजेशन जो है आप देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज देयर इन द साउथ. तो साउथ में अर्बनाइजेशन पहले हुआ, सुमेर में पहले हुआ, तो सुमेरियन लैंग्वेज पहले थी. एंड इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकडियन अराउंड 2400 BC व्हेन अकडियन स्पीकर्स अराइव. अकड का रीजन हमने देखा, अकडियन स्पीकर्स तब अराइव करेंगे जब अंडर द किंग सारगन. सारगन वाज द रूलर हु यूनिफाइड अकड एंड सुमेर. तो वो जब अक्कड़ एंड सुमेर को यूनिफाई करेंगे अराउंड 2400 BC ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे देन यू विल सी कि ये जो लैंग्वेज है, अक्कड़ जो लैंग्वेज है, अकेडियन जो लैंग्वेज है, वो जो स्पीकर्स है वो अराइव करेंगे. एंड देन दिस लैंग्वेज फ्लरिश टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम विद सम रीजनल चेंजेस occurring. Now, from 1400 BC, Aramaic also trickled in, and this language, similar to Hebrew, became widely spoken after 1000 BCE, and it is still spoken in parts of Iraq. So you have to remember this thing about the languages. We cannot do anything about it. We cannot just, इसके पीछे आप लॉजिक नहीं लगा सकते. Language was coming, and then they, started speaking it. So you have to just take care of this कि ये जो language है किस तरीके से किस रीजन में कब कब कौन से टाइम के साथ कौन सी लैंग्वेज इन्होंने बोलने लगी, मतलब ये बोल रहे थे. एंड आई होप दिस मच इज क्लियर. जस्ट वेट अ वाइल. आई सारगन की हमने बात कर ली. सारगन वाज द वन हु यूनिफाइड दिस थिंग. आपका सुमेर एंड अक्कड़ का यूनिफिकेशन कर दिया था. बेबीलोन के टाइम पे आप देखोगे व्हेन बेबीलोन वर इमर्ज्ड, एट दैट टाइम Hammurabi was there. Hammurabi के codes भी हैं, law codes. He was also an important ruler. Now next is that archaeology in Mesopotamia began in 1840s. 1840s के टाइम पे आप देखोगे मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है. At one or two sites, including Uruk and Mari, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे, which we discussed below, excavations continued for decades. No Indian site has ever seen such long term projects. तो आप देखते हो कि बहुत डिकेड्स तक यहाँ पे एक्सकावेशन चलते हैं, और ऐसे इंडियन साइट्स में कहीं भी इतने लंबे समय तक एक्सकावेशंस नहीं चल रहे. Now, not only can we study hundreds of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools, and seals as a source, there are thousands of written documents also. And let me tell you, there is one I guess one of the burials was there. It was there in during the time of in present. It was present in Ur, I guess. Ur में था वो. और उस burials में दोनों ही king and queen के burial में, I guess the burial was so vast that the king and queen, मतलब जब किंग मरा तो किंग तो मर गया था, that is why he was buried. But along with the king, you will find that all his slaves, his officials, and what not, wealth तो था ही था, लेकिन आप देख रहे हो कि the living beings, his slaves, his officials, all those people, they buried themselves. willingly जिंदा लोग अपने आप को दफना देते हैं राजा के साथ. And why this was so? Because they thought that their king was, their king was divine. He was ruling
बिकॉज ही वॉज डिवाइन इन नेचर, वो डिविनिटी का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन थे। तो वो डिवाइन वाली जो डिवाइन थ्योरी, एक तरीके से आप बोलते हो ना कि डिविनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है रूल का, कि वी आर रूलिंग बिकॉज वी हैव बीन सेंट बाय द गॉड। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। एंड दैट इज व्हाई दीस पीपल दे सेड दैट वी विल फॉलो आवर किंग बिकॉज ही इज डिवाइन। तो हम अपने डिवाइन किंग को हम आफ्टर लाइफ भी फॉलो करेंगे। तो वो डेथ हो गई है उनकी, लेकिन हम लोग इनको फॉलो करेंगे। सो you will find such vast graves and vast burials in Mesopotamian civilization that you cannot imagine such such burials have been found. And Mesopotamia was important to Europe, एंड इनफैक्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स की भी आपको कमी नहीं है। इंडिया के केस में हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हम देखते हैं तो वी डू नॉट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड हेंस द हिस्ट्री इज क्वाइट इनकम्प्लीट, incompletely reconstructed है। But when we look at Mesopotamian civilization, we have lots of sources to reconstruct. And Mesopotamia, you see, it was important to Europeans because of references to it in the Old Testament, the first part of the Bible. So we know that Bible के आपके दो पार्ट है, ठीक है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट एंड द अदर वन इज न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में आपके जो जीसस की लाइफ एंड टीचिंग्स उसके बारे में दिया हुआ है, एंड द क्रिश्चियन चर्च उसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड द ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलती है हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड और भी बाकी जो उसके बाद वाली जो चीजें हुई वो सारी चीजें। सो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल जो है, रेफरेंसेस उसमें आपको मिले हैं मेसोपोटामिया, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट में यू हैव द रेफरेंसेस ऑफ मेसोपोटामिया। फॉर इंस्टेंस द बुक ऑफ जेनेसिस इन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमर मीनिंग सुमेर एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज। तो ओल्ड टेस्टामेंट की जो द बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें आपको शिमर का रेफरेंस मिला है मीनिंग सुमेर एज अ लैंड ऑफ brick built cities. Now, travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land, and when archaeological work began there in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. So आप देखो कि इन लोगों को जब रेफरेंस मिला ओल्ड टेस्टामेंट में, एंड ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स जब यूरोप के थे और जब उन्हें एक तरीके से जब आर्कियोलॉजिकल वर्क वहां पे स्टार्ट होता है मेसोपोटामिया में, एंड दे कंसिडर्ड मेसोपोटामिया एज देयर एंसेस्ट्रल लैंड, बिकॉज आप देख रहे हो कि उनकी जो रिलीजियस बुक है उसमें एक लैंड मेंशन्ड है। एंड जब वहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन का काम शुरू हुआ तो दे वर ट्राइंग टू एंड दे वर अटेम्प्टिंग टू प्रूव कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो चीजें लिखी गई हैं बिल्कुल सच है, लिटरल ट्रूथ है। दिस वाज इनफैक्ट जो बाइबल में जो सारी चीजें लिखी गई है वो सच है। इस तरीके से ये ट्राई किया जा रहा था। इट वाज काइंड ऑफ अटेम्प्ट वाज मेड फ्रॉम द मिड 19th century, that means from around 1850s onward century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia। मतलब एकदम बहुत ही enthusiasm था ancient past को जानने के लिए मेसोपोटामिया की। In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible। तो आप देखोगे कि ब्रिटिश म्यूजियम एक एक्सपेडिशन भी भेजा गया ब्रिटिश म्यूजियम में टू सर्च दी टैबलेट जिसमें स्टोरी नरेट की गई थी फ्लड की, जो मेंशन की गई है बाइबल में। By the 1960s, just wait a second, by the 1960s, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true, but may have been all ways of expressing memories about important changes in history। अब यहाँ पे फिर उनको लगा कि नहीं, जो स्टोरीज हैं ओल्ड टेस्टामेंट में वो लिटरली ट्रू नहीं है, लेकिन ये वेज है एक्सप्रेस करने की मेमोरीज, जो आपकी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री में उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स बिकेम फार मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड। उसके बाद आप देखते हो कि धीरे धीरे साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ आपकी आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स है वो भी डेवलप होंगी, एंड दे विल आल्सो बिकम सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी रिफाइंड। व्हाट इज मोर
attention was directed to different questions, including reconstruction the lives of ordinary people. Now the focus was on reconstructing the lives of ordinary people, as to how the ordinary people were living, what was their opinion, what how were how were they reacting, or what was their way of subsistence, and all that. Establishing the literal truth of biblical narratives receded into the background. So एक टाइम पे ऐसा था कि बिब्लिकल नैरेटिव्स जो थे उनको प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी. इनफैक्ट यू विल सी कि बिब्लिकल फ्लड जो है उसको भी प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी. बट नाउ all that, it was, it receded into the background, and much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies. तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो आपके लेटेस्ट स्टडीज का पार्ट है. वी विल नॉट बी डीलिंग एनीथिंग विद द बिब्लिकल नैरेटिव्स और दैट or anything like that. So this is the end for today's lecture. I hope you like this video, and if you like this video, please do press the like button. Thank you so much for watching. Oh, sorry. Thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe to our YouTube channel. And thank you again. Keep studying and take care of yourself. Bye bye.